Hello students, I am Tej Pratap Singh, English lecturer, Jwala Devi Inter College, Civil Lines Prayag. You are most welcome on Vidya Bharti Kashi Prant YouTube channel. Today I am going to tell you about model paper of English for your coming examination. As you know that in your paper is divided into 4 sections, section A, section B, section C, section D. First of all, as soon as you will receive your paper, you should thoroughly study. You should thoroughly read the paper carefully so that you can be able to take all the instructions in your mind properly. प्रिय विद्यार्थियों, 2/4/2024 को आपका इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। उसका मॉडल पेपर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है, फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. This paper is divided into 4 sections, A, B, C and D. All sections are compulsory. All the questions are compulsory. Section A, reading. In section A, reading, as you know that one long unseen passage is given, and you have to clear your concept about that given paragraph properly. And when you are sure about that paragraph, after then you should try to give the answer of given questions. In reading, unseen passage is early rising leads to the health and happiness. Man who rises late can have little rest in the course of the day. Anyone who lies in bed late, it's compeller to work till a late hour in the evening. He has to go without the morning exercise, which is so necessary for this health. In spite of all his effort, his work will not produce as good result as that of the early riser. The reason for this is that he cannot take the advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hour of midnight is best time for the working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet it is sure to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must in long run have a bad effect on the quality of the work. This is our unseen passage. And questions are, why is early rising is better than rising late? Why do some thinkers burn the midnight oil? What's the disadvantage of working at midnight? What are the possible advantages of both morning hours and midnight hours? Which word in the passage is opposite of noisy? Substitute one word for the phrase in spite of. Give the antonym of the same. It means these are the questions which are based on this given. प्रिय विद्यार्थियों, आपको पहले इस अनसीन पैसेज को ठीक से पढ़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तब गिवन क्वेश्चन को उसी के योर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर देने का प्रयास. ऐसा नहीं करना है कि पैसेज की लाइन को आपको बिल्कुल वैसे सेम टू उतार देना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल. And section B, writing. In writing, question number 2, write an article any one of the following topics in about 150 words. Ambition of life or aim of life, place of women in Indian society, mobile phones, boon or bane. It means these are possible topics which may ask in your question paper, but
आपको इसी पर बिल्कुल आधारित तो दिया गया इम्पॉर्टेंट, मे भी हो सकता है इसमें कोई मिल भी जाए आपको, बट इसी के आधार पे आपको अपने टॉपिक को ठीक से तैयार करना है और you have to write in your own words. It is not possible that you will learn word to word from your book. You have to give your own views about the given topic in your own way. Question number 3, write a letter to the editor of newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality. This is most important official letter, and I am sure that if you know format of writing letter or application, there is no problem for you in solving this type of question. Write a letter to the superintendent of police of your city requesting him to improve the law and order situation in your area. Question number 4, grammar. मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वर्ब सब्स्टिट्यूशन उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है आंसर को. डिसलाइक or aversion to marriage is, correct answer is misogamy. B, the phrase pull a fast one means to deceive. The synonyms for astonishment is surprise. The poem has many obscure allusions. Which word in this sentence is an error? Many. Antonym of arrival, departure. Question number 5, change any one of the following into indirect speech. The player said, let us play now. My dear student, the player said, let us play now. Players. The players proposed that they should play then. लेट के बाद जब अस आता है तो सेंस ऑफ प्रपोजल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. और सेट को प्रपोज ऑफ सेक्शन चेंज करते हैं और लेटर्स को दैट दे शुड और दैट. द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल. द कैप्टन applauded them saying that they had done well. Combine any one of the following as directed within the brackets. Her husband died. She heard the news. She fainted. On hearing the news of her husband's death, she fainted. She studies in a convent school. She always comes first in her class. Complex. She always comes first in the class because she studies in a convent school. Convent school.
Question number 4, choose the correct option to answer the following questions. Dislike or aversion to marriage. तो हाँ, transform any one of the following sentences. It is time to over the class. Passive, very important question बेटा. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मे भी आपके पेपर में इस टाइप का आ सकता है. It is time for the class to be over. It is time for the class to be over. Gandhi was one of the greatest Indian leaders. You have to change this sentence into positive degree. No other. Gandhi was one of the greatest Indian leaders. One of the, ये जान लो आप, जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग रहता है तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगता है बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वन ऑफ द इज यूज इन सुपरलेटिव डिग्री एंड वी हैव टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री, very few is used in beginning of sentence. Very few Indian leaders, very few Indian leaders were as great as Gandhi ji. Question number 5, correct any one of the following sentence. Being a rainy day, we did not go out. It being rainy. Being rainy day, we did not go out. The cattle are grazing in the field. In the field. Use any one of the following words in sentence. Compliment. ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है MENT वाला जो पूरक होता है, एक जो है हमारा सम्मान के रूप में होता है. कॉम्प्लीमेंट एक पूरक होता है, एक सम्मान होता है. फ्लोर फ्लोर, एक फ्लोर फर्श होता है, एक फ्लोर आटा होता है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. इस टाइप का ट्रांसलेशन कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, बट आपकी सुविधा के लिए दे दिया गया है. इसको जैसे है, असफलता हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. वी शुड नेवर होपलेस फ्रॉम फेलोरनेस. सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं. सक्सेसनेस एंड फेलोरनेस आर टू सिस्टर्स. असफलता हमारी आंखें खोलती है. फेलोरनेस ओपन आवर आइज एंड टेल अस अबाउट आवर वीकनेस. उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं. रिमूविंग देम वी कैन सक्सेसफुल इन फ्यूचर. बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में सफल होते हैं. ग्रेट साइंटिस्ट बिकम फेलोर इन देयर एक्सपेरिमेंट. बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान पर पराजित होते हैं. ग्रेट वॉरियर्स अचीव डिफीट इन बैटलफील्ड. महान नेता चुनाव में हार जाते हैं. ग्रेट लीडर्स गेट डिफीट इन इलेक्शंस. परंतु वे निरंतर प्रयास करते, बट दे कंटिन्यू ट्राई, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं. एंड वन डे दे विल श्योरली अचीव सक्सेस. मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं. वी शुड नेवर बी होपलेस आफ्टर सीइंग डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, कुछ भी असंभव, नथिंग इज इम्पॉसिबल. जीवन स्पर्धा का दूसरा नाम है. लाइफ इज सेकंड नेम ऑफ कंपटीशन. इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस. ये मैंने आपको ये जो पैराग्राफ दिया इसके बारे में बताया. कोई एनी पैराग्राफ आ सकता है. आपको ये ध्यान देना बेटा
कि जो भी पैराग्राफ आएगा मैक्सिमम पैराग्राफ पास्ट टेंस में होता है, और बहुत सावधानी से, क्योंकि 10 मार्क्स का रहता है, इसको बहुत सावधानी से करिएगा ताकि पूरा का पूरा हमारा सही हो जाए। हाँ सॉरी, 5 मार्क्स का, पहले 10 का था, 5 का हो गया है जब एक पेपर हुआ। तो ये बहुत सावधानी से, एक नंबर का महत्व होता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन। अब आ गया सेक्शन डी, लिटरेचर। बेटा लिटरेचर में एक चीज बता दें आपको, यू हैव टू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू इन योर वे। डोंट ट्राई टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम योर कॉपी और बुक और इन नोटबुक। इफ यू वांट टू gain good marks in your English paper, your matter must be your own. How did the peddler of live traps manage to survive? What was the usual scene when French school began in the morning? Both are very important question. Question number 8, answer any one. You have to give only one. और क्वेश्चन में जरूर देखिए, एक का देना आंसर कि 2 का देना है या कितने का देना, जरूर पढ़ना आपको बेटा। हाउ डिड द पेडलर फील आफ्टर रॉबिंग क्राफ्टर? व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन? व्हाट डज हिज रिएक्शन हाईलाइट? बी, व्हाई वाज गांधी समन टू अपीयर इन द कोर्ट? हाउ डिड द गेन हिज लिबर्टी? Question number 9, read the following stanza of the poetry and answer the question given below. 3.2, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का, 6 नंबर का है बेटा। आंसर पहले आप स्टेंजा पढ़ेंगे, स्टेंजा पढ़ने के बाद में योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सेंस ऑफ स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, मैनी, माई मदर एट 66। ये इसमें 2 जो है, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66, इन तीनों में से ईश्वर चाहेंगे तो जरूर आपको ये 1 मिलना तय है, 100% मिलना चाहिए। हाँ, सेंट्रल आइडिया में जैसे ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे टाइप लिखो उसको समझ, वो यू हैव टू गिवन योर सेंट्रल आइडिया, मीन व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम and the central idea. When you will write your central idea, keeping the poem keeping quiet is composed by poet का नाम, इसके बाद में what is the main theme of the poem you have to write there. Question number 11, answer the following questions in about 40 words each. 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है बेटा। What unique opportunities does the Antarctic environment provide to the scientists? Or how does Mr. Lamb react when Derry enters his garden? Both are very important question. Question number 12, answer any one of the following questions in about 80 words. Who was the Tiger King? King. What were his other names? How was he named as the Tiger King? B, good human values are the far above any other value system. How did Dr. Sadao succeed as a doctor as well as a patriot? Thank you. Vidya, Bharti, Kashi, Prant YouTube channel, and my dear student, you must take proper care towards the given instruction and model paper. Thank you very much. Have a nice day.